Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Shri Gaur Nitai ki jai Srimad Bhagavad Gita ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Hare Krishna. Welcome to all of you back for the Bhagavad Gita session at the start of the week. Unfortunately, we have to cut down our Bhagavad Gita sessions to twice a week. Earlier, we were doing thrice a week for some practical reasons. And we are doing chapter 10. We completed 31 slokas. We're dealing with the section 4. Chapter has been divided into 4 parts for study purposes. So, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए इस अध्याय को 4 विभाग में डिवाइड किया गया है और हम चौथे विभाग में हैं अभी, जो 19वें श्लोका में से स्टार्ट होता है अप टू द एंड 42वें श्लोका तक, from 19 to 42. And this section discusses about further opulences of Krishna. Krishna goes on describing his variegatedness और कृष्णा हमें बतलाता जाते हैं कि कैसे हम कृष्णा को हर जगह देख सकते हैं या याद कर सकते हैं. So in the last class we learned that the essence of fire sacrifice, मतलब यज्ञ is not just lighting a fire. यज्ञ का मतलब ये नहीं कि होम कुंड में हमने अग्नि का प्रज्वलन किया और कुछ उसमें डाल दिया और हो गया. तो यज्ञ का ये अर्थ नहीं है. So it is not about lighting a fire outside. It should result in lighting the fire within. That means it should lead to illumination. It should lead to self-realization. यज्ञ का अंतिम जो परिणाम हमें जो चाहिए वो क्या है? ना केवल अग्नि का प्रज्वालन करना. It's not just about lighting a fire without. It's also about lighting the fire within. The fire of knowledge and the light of illumination should come within us. That's the whole purpose of doing any spiritual practice. Gnana, Vairagya. These are the 2 things that are the pillars of progress in spiritual life. Vairagya, again I'm telling, Vairagya is not being neglectful. वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक जीवन में हो, आप एक परिवार में हो और वैराग्य के नाम पे आपको परिवार को नेग्लेक्ट करना है. ये अर्थ नहीं होता है. वैराग्य का मतलब है यू आर कनेक्टिंग एवरीथिंग टू कृष्णा. यू आर नॉट कंसर्न्ड ओनली अबाउट द पर्सन इन से बिकॉज दैट पर्सन इज योर हस्बैंड या वो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार वाले हैं, माँ बाप हैं. दैट्स नॉट द ओनली कंसर्न. योर मेन कंसर्न इज यू आर टैग्ड टू देम बट यू आर कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देम with a central point, that is Krishna. So Krishna should become the center point of all our activities. Then we can progress in our spiritual life. So time is too precious not to be engaged in devotion. ये हमें अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए. बहुत सारे लोग अभी, अगर आपके एक्सपीरियंस में भी होगा, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप मंदिर जा रहे, इतने घंटे बिता रहे, चैंटिंग करते 16 माला, 2 घंटे लग जाता है, फिर आप आध्यात्मिक अभ्यास भी करते हैं आधा पौने घंटे और आप कुछ लेक्चर्स भी सुनते हैं, तो दिन में 4-5 घंटे आप आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त है, तो लोग हैरान हो जाएंगे. बोलेंगे आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं. हमारे पास टाइम ही नहीं है. हमारे पास आप 16 माला कर रहे हो, हमारे पास 1 माला करने का टाइम नहीं है. बिकॉज they think that there is time. The biggest misconception any human being has got, any sane human being has got, is
I have got time. Actually हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी देर हो चुका है. लेकिन Guru Prabhupada is telling us we must make the best use of the bad bargain. मनुष्य जीवन good bargain. Not being spiritually inclined, bad bargain. थोड़ा बहुत समय मिला है, good bargain. उसको सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, bad bargain. So material world is full of bad bargains. तो हमें इस bad bargain, क्या bad bargain है? हम व्यस्त हैं, हम सब गृहस्थ हैं. We are caught up in our family life. We have to take care of our family. We have to lead a normal grahastha life, and at the same time be Krishna conscious and progress in Krishna conscious. And how we are going to do that? Making the best use of the bad bargain. Bad bargain क्या है? हम इस चीजों में फंस गए हैं. So वो ठीक है. And we cannot be neglectful. वो दूसरी बात है. So being in this samsara, how we can connect ourselves and our family members to Krishna. Mata na sasyat, pitarun na sasyat, guru na sasyat. So very clearly it is mentioned in the Shastras, do not become a father if you cannot give your child a spiritual education. Do not become a mother if you cannot give your child spiritual values. Do not become a guru if you cannot take your disciple back home, back to Godhead. खुद आप नहीं जा पाओगे, अपने disciples को कैसे लेके जाओगे आप? So we should not become any of this unless we are capable of, first of all, becoming Krishna conscious ourselves, and with a little bit of purity able to take our family along. It is our duty. So spiritual progress is not all for nothing. तो ऐसा नहीं कि या तो ये या तो वो, या तो मैं जपा करूंगा या तो मैं संसार का जो responsibilities है निभाऊंगा. No, we have to do both. Because material progress is all for nothing. भौतिक जगत में हम कितना भी प्रोग्रेस करें, एक्चुअली इन द एंड मृत्यु सर्व हरश्चाहम. कृष्ण आएगा मृत्यु बन के और सब कुछ आपको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा. रिश्ते नाते, जो पैसे कमाया, धन कमाया, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपका काम नहीं आएगा. इंश्योरेंस पॉलिसी आपने बनाया है, बनाया होगा, किसके फायदे होगा उसके आपके जाने के बाद? आपके परिवार वालों का. सो वी मस्ट रिमेम्बर दिस. सब कुछ छोड़ के जाना है, बट जब तक वो हमारे पास है, कृष्णा ने हमें दिया है, तो अब हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फैमिली नाइसली. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर प्रोफेशन नाइसली. वी मस्ट बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री. आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द लैंड. You are not a part of your community. You must be a good part of community, an active part of your community, and take everybody along towards Krishna. You must be a good family member, a responsible family member, a good father or a good mother, a good wife or a husband, a good grandfather and grandmother. यही है Krishna consciousness का secret, that we continue to do our best with our relations and with our positions, but we now make Krishna the central point. So life is a disaster movie in slow motion. हमें पता है. Tragedy movie. When do you call something a tragedy movie? अंत में हीरो मर जाता है या हीरोइन मर जाती है या दोनों मर जाते हैं. तो हमारे लाइफ एक ट्रेजेडी मूवी है. प्लीज रिमेम्बर दिस. क्यों ट्रेजेडी है? अंत में क्या होगा? हीरो जो आप हीरो आपके लाइफ में या हीरोइन आपके लाइफ में, आप तो मर ही जाएंगे. दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ. दैट इज द एंड ऑफ द पिक्चर. तो ये तो ट्रेजेडी मूवी हुआ और वो स्लो मोशन में चलेगा. बट टू नॉट मेक इट अ ट्रेजेडी, वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस सो दैट वी हैव अ सक्सेसफुल डेथ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग. ये मैंने पहले ही बताया आपको. लेकिन प्रभुपा जी बोलते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग. आवर मेन गोल इज टू नो द आर्ट ऑफ डाइंग, सक्सेसफुल डेथ. तो सक्सेसफुल डेथ क्या है? नॉट टू कम बैक इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, नॉट टू हैव अनदर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. दैट इज सक्सेसफुल डेथ. जिस समय हम
फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे, ऐसा मरण हमें आएगा जो इसी लाइफ के एंड में प्रभुपाद जी सबके लिए आशा करते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लाइफ we must be in such a way that we go back to the Lord and we don't come back into this world of miseries. So when immediate circumstances repeatedly encroaches on the ultimate, लेकिन प्रभु जी अब प्रेजेंट का तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो अंत काल में है, तो अब के लिए तो जीना पड़ेगा. Yes, we must live for the present, but we must have the end in the mind also. And the end in mind is हमारा ट्रेजेडी मूवी में हमें ट्रेजेडी मूवी से हमें we should make it a movie of success. How to make a movie of success? By having a successful death. What is successful death? By not coming back, becoming such a way that we don't have to come back into this material world. लेकिन अभी इमीडिएट सर्कमस्टांसेस, मेरे प्रोफेशन है, मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, फैमिली रिक्वायरमेंट्स है. यस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. वी मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टफुल. सो वी मस्ट डू एन इमीडिएट रियलिटी चेक एज टू वेयर वी आर हेडिंग. लेकिन इसमें उलझना नहीं है. देखिए, नॉट बीइंग नेग्लेक्टफुल एट द सेम टाइम गेटिंग फुल्ली इन्वॉल्व, दोनों नहीं होना चाहिए. So we must do our duty and rest of the time give it to Krishna. We must do, while doing our duty also, we must always remember Krishna. Krishna is telling us how to do that. कैसे हम कृष्णा को हर पल हर वक्त याद कर सकते हैं. So what is the reality check? अगर मेरे भौतिक गतिविधियां मुझे कृष्णा को बुला रहा है, that means I am not doing it the proper way. ऐसा नहीं कि आपको स्टॉप करना है, अब घर बार छोड़ना है. No, that means you are not being Krishna conscious in the way you are executing it. तो कृष्णा को आपने सेंटर में नहीं रखा है. You are trying to become the master of your life. You are trying to think that सब आपके हाथ में है. यही प्रॉब्लम है मटेरियल वर्ल्ड में. The problem is we think everything is in our hands. Actually nothing is in our hands. The only thing in your hands is your hands and the effort. जो आपके हाथ में है वो आपके हाथ ही है, और आपका जो प्रयत्न है वही है. बाकी सब आपके हाथ में नहीं है. संदर्भ आपके हाथ में नहीं है. सर्कमस्टेंस इज नॉट विथ यू. टाइम इज नॉट इन योर हैंड्स. आपके बोलते हुए टाइम नहीं रुकेगा, टाइम चलता रहेगा. भगवान तो आपके हाथ में, मतलब ही इज नॉट योर ऑर्डर कैरियर. ही नोस व्हेन टू गिव, व्हाट टू गिव एंड हाउ मच टू गिव. ही नोस वेयर टू कीप यू इन दिस प्लेस और दैट प्लेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो ही नोस द बेस्ट. So it is not in our hands. Sometimes we're helpless. Suddenly हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, सडनली हमारा जॉब चेंज हो जाएगा, सडनली हमारा आश्रम भी चेंज हो जाएगा. ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ आश्रम बन गए. फिर घर में कुछ मृत्यु हो जाएगा. सडनली वी आर नाउ लेफ्ट हाई एंड ड्राई. तो ये तो दिस इज a part of life. But because we are Krishna conscious, we have now started reconciling to these things. But in the outside world, यमराज जी यक्षा प्रश्न में यमराज जी जब आके पूछते अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से, what is the most surprising thing? The most surprising thing in the world is every day we see people around us dying, but we live as though it is not going to happen in our lives. या हमारे साथ नहीं होगा या हमारे परिवार में ये नहीं होगा. So this is the most surprising thing. Yudhishthira Maharaj says we must be prepared for all these things, and that is spirituality. I am not saying that we must be pessimistic, but we must be realistic. हमें realistic होना चाहिए. So having said this, we will move ahead with today's discussion of shlokas. We have to start from shloka number 32. Krishna is telling, Sarganam adir antascha madhyam chaivaham arjuna adhyatma vidya vidyanam vada pravadatam aham. So I gave a good 15-minute introduction today because I have got a lot of questions in the last week about family life. तो जाहिर है हम आप सब गृहस्थ हैं, तो आप फैमिली लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे.
Nothing wrong with it. There's nothing wrong in trying to inquire. So that's why I had to, especially for this 10th chapter, especially in the last 2-3 sessions, if you see, I'm taking a 10-minute or a 15-minute introduction. So that in this 10 minutes, 15 minutes, I would have answered all the questions. जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, उन सब का आंसर्स मैंने इस इंट्रोडक्शन में दे दिया है. And those who asked me the questions, they already got their answers, provided they are online. वैसे मिस हो जाएगा तो YouTube में ये अपलोड हो जाएगा, but it take a lag time of 20 days. So let's move ahead. So Krishna is telling here, of all creations, I am the beginning. तो सर्गाणाम आदिर, तो मैं सृष्टि का आदि हूं, फिर उतना ही नहीं है. एंड द एंड ऑल्सो, अंतश्च, तो मैं आदि भी हूं, मैं अंत भी हूं. फिर अच्छा, आदि है, अंत है, बीच में जो है वो क्या है? एंड ऑल्सो द मिडिल, मध्यम चैव अहम च एव सर्टेनली, वो बीच में छूट नहीं गया, वो भी मैं ही हूं. मतलब सृष्टि का बिगिनिंग भी मैं हूं, एंड द स्टार्ट ऑफ द क्रिएशन, एंड एट द एंड ऑफ द क्रिएशन आई एम आल्सो द मेंटेनेंस ऑफ द क्रिएशन इन द मिडिल पार्ट. सो क्रिएटर, मेंटेनर, एंड फाइनली डिस्ट्रॉयर. GOD, governor, then maintainer, one who maintains the order, and destroyer, that is God, GOD. So Krishna is confirming here, हमारे हर पहलू में, हर मोड़ पे, हर क्षण कृष्णा हमारे साथ हैं. Is there in our birth, is there at the time of our death, and is there throughout our life, and beyond that also. So Arjuna, of all sciences, and the spiritual science, the Adhyatma Vidya Vidyana, I am education, but altu faltu education I am not representing. I represent spiritual education. And what spiritual education? Of the self. The Adhyatma Vidya Vidyanam. And among logicians, I am the conclusive truth. Vada Pravadatam Aham. So, Hare Krishna, just give me 1 minute. So if you have any questions, you can keep posting on the WhatsApp. I'll check and I will answer if possible in the session or after the session. I'll try not to answer during the session so that the flow doesn't get disturbed. But you can post your questions. So Krishna is telling, आपका जो वाक शक्ति है, आपका जो तर्क करने का, वाद करने का शक्ति है, वो भी मैं हूं. And I am the conclusive truth. So we know Krishna is the absolute truth, and that's also the conclusive truth, Parama Satya. So among the created manifestations, the total material elements are first created by Mahavishnu. So ये हमने, if you are all in your Srila Prabhupada Ashraya course, many of you are, you already learned how Mahavishnu or Karana Kashay Vishnu creates the all the universes, thus giving our credence to multi-universe theory. आज साइंस बोल रहा है कि एक ही यूनिवर्स नहीं है, हम सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस में एक यूनिवर्स में हम रह रहे हैं. तो उनको अभी पता चल रहा है, लेकिन हमारे वेद ग्रंथ में करोड़ों करोड़ों साल पहले ये उल्लेख किया गया है कि अनेक अनेक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है. हम उस एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं. वैसे अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में कोटि कोटि गैलेक्सीज है. एक एक गैलेक्सीज में कोटि कोटि सोलर सिस्टम्स है और स्टार सिस्टम्स है. एक एक स्टार सिस्टम में मेनी प्लैनेट्स, एंड इन दैट मेनी प्लैनेट्स बिलियंस ऑफ पीपल. अर्थ का पॉपुलेशन क्या है? अबाउट, वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अबाउट 8 बिलियन टुडे. उनमें से एक हम हैं. व्हाट इज आवर सिग्निफिकेंस? क्या है हम कुछ भी नहीं है. फिर भी we must remember we are a part and parcel of God, and we must make sure that we remain that, and at the end go back to Him and serve Him eternally. So Brahma is the secondary creator. So the Supreme Lord, therefore, is the beginning and the middle and the end of all creation. And spiritual science of self, that is represented by the 4 Vedas, Vedanta Sutra. So Adhyatma Vidya क्या है? वेद ग्रंथ, Vedanta Sutra, Puranas, Itihasas, and among them the topmost. In fact, the only things that we need to concentrate upon is Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Graduation, post-graduation.
और तीसरा है PhD चैतन्य चरितामृता. If we read these three things, even if you read only Bhagavad Gita, your knowledge is complete. But to deepen your knowledge, we must read Srimad Bhagavatam. And to evoke love of God with the knowledge, we must read Chaitanya Charitamrita in this order. We must not jump. अच्छा प्रभु जी पहले ही चैतन्य चरितामृता पढ़ लेंगे, we might not be able to get the full benefit. We must go in a systematic way. So these are all representations of Krishna. Gita is autobiography of Krishna, or Bhagavatam is biography of Krishna. Chaitanya Charitamrita is how to attain the love of Krishna. The presentation of evidence is called Japa, and among logicians there are different stages of argument. एक तो वादा है, और यहाँ पे very important sentence, very surprising sentence. The presentation of evidence is called Japa. The attempt to defeat one another is called Vitanda, and the final conclusion is called Vada. देखिए, जब तर्क करके हम जीत जाएंगे उसको वादा बोलते हैं. जब हम किसी को हराने के लिए कुछ कर रहे हैं तर्क, तो विथंडा बोलते हैं. लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, वो जपा है. हमारे एविडेंस क्या है? हम रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र? हे कृष्णा, हे एनर्जी ऑफ कृष्णा, राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर service eternally, loving devotional service eternally. This is ultimate truth for us. तो और कोई वादा नहीं है, और कोई वितांडा नहीं है. All logic and everything comes and ends here. That we are eternally servants of Krishna. Jiver Swarup Hoy Nityera Krishna Das. And we must remain in that position. The problem in the material world is we are conditioned to try to become masters. हम हर किसी के ऊपर मास्टर बनना चाहता है. पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है. फादर विल वांट टू कंट्रोल द चाइल्ड एंड द चाइल्ड विल वांट टू कंट्रोल द फादर. आजकल के बच्चे तो आपको जानकारी है, दे ट्राई टू बिकम द फादर ऑफ द फादर. इट इज अनफॉर्चुनेटली द इन्फ्लुएंस ऑफ द बैड बार्गेन ऑफ कलियुगा दैट वी आर इन. बट वी मस्ट लिव विथ इट and we must not lose our focus on spirituality. The conclusive truth, the end of all reasoning process, is Krishna. And to attain Krishna, to remain Krishna conscious, to get be in our constitutional position, we must chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So we have to remember that हमारा अंतिम लक्ष्य कृष्णा है, कृष्ण प्रेम है, और उसको पाने का एक ही उपाय है, एटलीस्ट इन कलियुगा, चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र. सो दैट इज द. तो कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी से तर्क करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, मेरे जिंदगी में इन्होंने जहर घोला, मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया. कोई कुछ नहीं कर सकता. वी अलाउ पीपल टू डू इट. दैट इज व्हाट वी अलाउ पीपल टू डू इट मीन्स वी गेट अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल डू टू अस. And that is what they want. They want to affect us. और अब हम affected हो गए तो वो जीत गए. We must not get affected. तो artificially I will not get affected. कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे मेरी जिंदगी में कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो मुझे तो बुरा लगेगा. ठीक है, आपको बुरा लगेगा. So you have to take evasive action. You must be intelligent and know how to deal with the situation. Sama, Dama, Danda, Veda. 4 principles has been given. Sama, Dama, Danda, Veda. I will not go into the details of this. You already know this. So Sama, Dama, Danda, Veda. So you should remember this. We must deal with people like this. We must first try to reason out with them. Then we must try to buy them out. Dama. ठीक, आपको जो चाहिए ले लीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए. Then so give me peace. Allow me to continue my spiritual practice. Danda. Punishment भी हम दे सकते हैं. Of course, punishment doesn't mean that you will take the law in the hand. There are various ways of dealing with it. And Veda, to keep that person away, finally. That's the best we can do. But we must never lose our focus on Krishna being the center of our life. Everything is Krishna, and Krishna is everything. Our ultimate goal is Krishna.
बाकी सबसे हमें विचलित नहीं होना है. So Krishna further enlightens us. We'll try to do 2 more slokas, at least 3 slokas we should complete in a class. But at this point, I don't mind spending so much time on introduction. अक्षराणाम अकारोस्मि द्वन्द्वा सामसिकस्य च अहम एवाक्षयो कालो दाता हम विश्वतो मुखः. Originally, I had thought 10th chapter I'll finish very easily because less purports are there. So maybe in 10 sessions I'll finish. Maybe I'm going to take 5 sessions more. मतलब अभी से 2-3 सेशन में खत्म हो जाएगा. But it is worth it because all the introductions I'm giving are based on the questions that you are asking. And especially when I have started 10th chapter, a lot of questions are coming, and understandably so. So we'll move ahead. Of letters, I'm the letter A or Akara. तो संस्कृत का कोई और लैंग्वेज का स्टार्टिंग लेटर ही होता है. तो अकारosmi. So I'm the beginning of their alphabets. Then among compounds, I'm the dual word. Dvandva samasikasya cha. तो 2 अक्षर वाला फिर मैं वो. The next, I'm also inexhaustible time. Aham evakshayo kalo. So earlier we had read among the subduers I am time. तो काल का दूसरा परिभाषा था. अब कृष्णा बोल रहे aham eva akshaya kalo. I am the unlimited time. I am the subduer time. I am unlimited time. And further later on he says मृत्यु सर्वहरश्च अहम. मृत्यु बन के तो मैं ही तो आऊंगा. कहाँ मुझसे एस्केप करके जाओगे. इस आपने मुझे इस जीवन में नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन अंत में मैं ही मृत्यु बन के आने वाला हूँ. तो मुझसे तो आप बच ही नहीं सकते. बिकॉज यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी. यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम मी. दाता हम विश्वतो मुखः. एंड ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा. मैं ही तो ब्रह्मा हूँ. मुझसे ही ब्रह्मा आ रहे हैं. वेयर इज ब्रह्मा कमिंग फ्रॉम? ब्रह्मा इज कमिंग फ्रॉम द नेवल of the lotus navel of Garbhodakashayi Vishnu. Where is Garbhodakashayi Vishnu coming from? He's coming from Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu. Where is Mahavishnu coming from? Coming from Sankarshana. Where is Sankarshana coming from? Going back like this, Narayana, then another Chaturvyuha, and Balaram, and then Krishna. Final source is Krishna. So Krishna is telling here, of creators I am Brahma, which is correct. Whose manifold faces turn everywhere. और विश्वतो मुखः. ब्रह्मा के 4 मुख, पहले 5 मुख थे, वो अलग सा कहानी है. तो 4 मुख हर दिशा वो देख रहा है. और हमारे ब्रह्मांड का चतुर्मुख ब्रह्मा है. Our Brahmanda is the lowest quality Brahmanda. Please understand this. यहाँ से बेहतर ब्रह्मांड है. वहाँ का जीवन, material life is more enjoyable. But that should not be our aim, because वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा. Brahma is also going to die. He's having a very long span, but he's also a living entity. He's also going to die. We must not even aspire to become Brahma. We should try to remain Krishna's servant and go back to Krishna in our spiritual body and our constitutional position and serve Krishna. So, Krishna is telling here, Akara, I am. Then 2 letters, I am the compound that makes it this one, that I am. So without Akara, nothing can be sounded. तो आप देखिए आपके भाषा में अकारा का कितना महत्व है. हर जगह अकार आपको मिलेगा. So, and then the dual word, like Ramakrishna, dual word. Example there है Prabhupada, Ramakrishna. So that is Dvandvaha. So for instance, Rama and Krishna have the same rhythm. So it is called as the dual word. And therefore they are called dual. Dvandva samasikasya cha. Among all kinds of killers, time is the ultimate. And time is the representative of Krishna. Antascha, the end also is Krishna. Among the creators are Brahma, and various Brahmas are there. Chaturmukha too. When we read the Brahma Vimohana Leela in Krishna book, where we come across Brahmas coming from different Brahmandas, having 10 million heads, 100 million heads, countless heads, काउंट ही नहीं कर पा रहे, उतना हेड है. तो चतुर्मुखा ब्रह्मा देख रहे, अरे ये सब कौन है? मैंने सोचा था मैं ही एक ब्रह्मा हूँ,
तो मेरे बाप निकल गए सब, तो मेरे पास तो 4 मुख हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ 10 मुख वाले, 10 लाख मुख वाले, करोड़ों मुख वाले, तो मेरा क्या है पोजीशन? तो ब्रह्मा बिकम्स वेरी humbled. That's why it's called ब्रह्मा विमोहन लीला। और ब्रह्मा के सामने हम क्या है? हम कुछ भी नहीं। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। सो ब्रह्मास आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और ये सब कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है। So Krishna is now telling मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। So it's a very interesting shloka. I'll tell you why. It's going to put to rest a lot of doubts that had been put on Krishna's view on women, or Prabhupada's view on women, or ISKCON's view on women. So I am all devouring death. मृत्यु सर्वहरश्चाम, चाहे कुछ भी कर लो आप मटेरियल वर्ल्ड में, अंत में मृत्यु बन के मैं आऊंगा, मेरे साथ आपको जाना पड़ेगा सब छोड़ के। तो आपका क्रेडिट वही है, क्या है? आपने कितना माला किया, कितने बार कृष्णा को याद किया, कृष्णा उनका कितने बार उनका और गुरु का आपने कितने समय सेवा किया, यही चीज है जो आपके साथ आने वाला है। ऑफ कोर्स all the responsible jobs you did, you will get good credits for that. वरना फिर हम not doing our duty also will have to come back into the material world. अच्छा, मुझे पता चल गया है मैं एक आत्मा हूँ, पत्नी को नेग्लेक्ट करूंगा, पति को नेग्लेक्ट करूंगी, बच्चे को मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने छोड़ दिया, तो ये फुलफिल करने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो वी शुड नॉट डू दैट। We must fulfill our responsibilities and then at the same time progress spiritually, because what is going to come with us is our spiritual progress. बाकी सब so that we don't have to come back. कोई ऋण नहीं रखना चाहिए। उद्भवश्च भविष्यताम, तो कृष्ण is saying, I am the generator of all things yet to be. जो आपने अभी देखा ही नहीं है, वो फ्यूचर में जो आने वाला है वो भी मैं ही हूं। तो now very interesting. Among women, I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, faithfulness, patience. और नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये सब हूं। Because all these are compared to be females. कीर्ति, fame, यश, श्री, beauty, wealth, वाक, बोलने का शक्ति, that is speech, अच्छा नारी नाम, ये सब नारी से तुलना किया गया है। Then smrutir, memory, then intelligence, medha, faithfulness, dhritihi, and patience, shama. ये सब कौन है? नारी का स्वरूप है। So they're all representations of female, and everybody has got a female part of in them. तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ now the female should not go the other way. अच्छा ये सब हम हैं। No, it is a female character, and this character is there in men also. Men have the male ego, but they also have some feminine characteristics. So these are the feminine characteristics. And women, for most part of it, does have it. But in Kali Yuga, they may not have it fully, and some of it may be missing. So now this is the answer for the question when people say that Krishna has previously told even less intelligent people like women, Shudras, Vaishyas can become my devotees. Why is he calling less intelligent? It's called less intelligent because they're simple-minded. Simple-minded in the sense because they're not going to use too much of their thinking power. They're very simple-minded. In that way, it is called as less intelligent, not in any other way. When a person becomes Krishna conscious, in fact, when a woman becomes Krishna conscious, she can overtake the man. So at that time, there is no distinction between man and woman. But भौतिक जगत में जो मर्यादा है, as a woman, your womanly nature, and you have to be protected. All this you have to go through. You must be protected by the father, by the husband, by the eldest son. ये सब जो material rules है, वो तो follow करना ही है. But spiritually, a female can even overtake the man, but that shouldn't become an unhealthy competition. So
So having said this, there ends the debate. Because Krishna himself is telling, I am in the form of female, I am representing all this. So this is supposed to be the a complete character of a female. And again, I'm clarifying, these features are also present in man. All the wives don't go and fight with your husband now saying that ये तो हम है, ये आपके अंदर है नहीं. So don't get into this argument. So among women, I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, faithfulness, and patience. So we must not read between the lines. So Prabhupada ji has called woman less intelligent. ये तो हमारा तौहीन है. No, it is not in the sense of your per se intelligence. Prabhupada is talking about. Prabhupada is talking about simplicity. कुछ लोग बहुत simple like villagers. It's not that they are not intelligent. Intelligent नहीं होते तो वो farming कैसे करते हैं? वो अपना गृहस्थी कैसे maintain करेंगे? They are intelligent, but they're simple-minded. They're not going to, too much wrack their brains into thinking about इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, ये ऐसे क्यों हो गया. In that way, they are simple. शहर से आने वाला लोग बहुत तर्क करते हैं. इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया. And they will read between the lines. जो आपने नहीं किया उसमें मसाला भी ऐड कर देंगे. ये city life होता है. ये city because city life is full of rajoguna. The villager is coming from, can say that rajo sattva guna, that way. So, so today's discussion will try to complete at this point with this purport. As soon as a man is born, he dies at every moment. तो हम हर वक्त मर रहे हैं. Every year we are celebrating birthdays, but actually क्या हो रहा है? हर साल हमारा आयु घट रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा. The death is devouring every living entity at every moment, but the last stroke is called death itself. तो हर वक्त हम मर रहे हैं, लेकिन अंत में जो आता है उसी को हम मृत्यु बोलते हैं. And we undergo 6 basic changes, Shad Vikara. We already have studied this in our Srila Prabhupada Ashraya. Just to recollect, we are born, we grow, we remain for some time, we reproduce, we dwindle, we vanish. तो जन्म होता है, फिर हम बढ़ते हैं, फिर हम रहते हैं, फिर हम पैदा करते हैं बच्चों को, फिर हमारा व्यवस्था बिगड़ जाता है, हेल्थ बिगड़ जाता है, and finally we will vanish, we will die. So the first deliverance from womb, and that is Krishna, and the first generation is the beginning of all future activities. जन्म से हमारा future activities भी प्रारंभ हो गया, and जन्म से ही हमारा मृत्यु प्रारंभ हो गया. So one need not read many books on different subjects. The ability to remember a few and quote them when necessary is also another opulence. So Krishna, Prabhupada is concluding here when he's talking about intelligence and good memory. That doesn't mean that good memory doesn't mean that you should read a lot of things, remember a lot of things. You can read a few things, a few important things and remember them. So thank you very much for joining me today. Today again we completed 3 shlokas only. It doesn't matter, we'll take another 2 sessions to finish this chapter. So we'll meet tomorrow again at the same time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. So I'll be online on WhatsApp for the next 30 minutes. Any questions you have, please post. Better to ask by SMS, messaging. If you want to call, you can call us. If today it is late, you can call me tomorrow.